So, hello guys, and welcome back to yet another video. My name is Sahil. So, if you guys don't know about me, I am candidate master on code courses. I am 5-star on code chef. I have been to ICPC regionals, and I have also cracked Google Code Jam. Yeah, so that was about me. So, आज हम solve करेंगे bi-weekly contest 74 की सारी problems. So, let's start with the first problem. Divide array into equal pairs. You are given an integer nums consisting of two n integers. You need to divide nums into n pairs such that each element belongs to exactly one pair and the elements present in a pair are equal. Return true if nums can be divided into n pairs, otherwise return false. तो basically अपने को एक array दी है of size 2n. Size 2n क्यों दिया है? So that we can note number are even, like there is an array with even number of elements. अपने को इसको ब्रेक करना है सच दैट इनटू पेयर सच दैट हर पेयर में सेम एलिमेंट्स लाइक ए ए हो बी बी हो अनदर एरे होगी अदर पेयर होगी सॉरी ए की सिमिलरली वी वांट टू ब्रेक दिस एरे इनटू सच पेयर्स तो बहुत ही इजी है इफ वी कैन ब्रेक इनटू सच पेयर्स तो नंबर ऑफ every element must be even. So अगर every element even है, we can break it into such pairs. If there is an element, let's say C, that is occurring, let's say odd time, let's say 3 times for now, then we can make a pair out of this. But ये वाला C कभी pair नहीं होगा. So if number is occurring odd times, it is impossible. तो यही मैंने करा. I kept a count, a map, then I kept a count of every element. देन मैंने सब उस एलिमेंट्स पे इटरेट करा एंड अगर किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ऑड है आई रिटर्न बैक आई गेव द आंसर एज फॉल्स अदरवाइज आई रिटर्न द आंसर एज ट्रू. So that was the first problem, pretty easy I would say. Next is maximize number of subsequences in a string. You are given a zero index string text and another zero index string pattern of length 2. Both of which consist of only lowercase English letters. You can either add either pattern 0 or pattern 1 text exactly once. Note that the character can be added even at the end or beginning, and the maximum number of times pattern can occur as a subsequence of modified text. So अपने को क्या दिया है? Let's read. तो अपने को दिया है we are given some pattern B. We are given some pattern string. Let's say a pattern string for now is anything AB. So pattern string की length हमने fix करी है. Pattern is always of size 2. So I'm now for now assuming it is AB. And then उन्होंने को text दिया हुआ है. So let's say there is some random text. अपने को क्या करना है? We need to add any of one characters. अपने को या तो A add करना है या B add करना है कहीं भी string में. Such that occurrence of AB is maximum. Occurrence of AB in this string is a subsequence. Let's say अगर यहाँ पे A है यहाँ पे B है तो इसमें अगर तुम देखोगे तो एज अ subsequence AB आ रहा है 2 बार तो यहाँ हो गया 2 times and another 3 times here. तो 2 plus 3 इस सीक्वेंस में 5 times AB एज अ सबस्ट्रिंग आ रहा है एज अ सबसीक्वेंस आ रहा है राइट. तो अपने को क्या करना है अभी? We need to add either A or either B one time in this string such that ये subsequence maximize हो जाए and we need to print the number of maximum such subsequence. तो इसमें बेसिक ऑब्जर्वेशन यही है कि अगर लेट से अगर हमारे पास A maximum है there are two numbers either there are two letters A और B. अगर मेरे पास A maximum है लेट से अगर मेरा A का काउंट लेट से 10 है और B का काउंट 3 है सो इट इज ऑलवेज वाइज कि जो मैं बी है बी को इसके एंड में अपेंड कर दूँ राइट. क्योंकि अगर बी मैंने एंड में अपेंड कर दिया तो मेरे को मालूम है कि मेरे पास 10 ए हैं तो ये 10 ए इस बी के साथ पेयर हो जाएंगे और 10 एक्स्ट्रा सब सीक्वेंस बन जाएंगे. सिमिलरली अगर लेट से मेरा ए का काउंट 10 है और मेरा बी का काउंट 13 है तो मेरे को पता बी ज़्यादा है मेरे पास तो मैं फिर क्या करूँगा मैं जो मेरा ए है उसको स्टार्टिंग में अपेंड कर दूंगा and then this A will form
13 न्यू सबसीक्वेंस विद द बी प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। तो 13 न्यू सबसीक्वेंस ऐड हो जाएंगे, राइट। तो बेसिकली मेरा लॉजिक क्या हुआ कि जो भी मेरा ए या बी में से मैक्सिमम है, मैं उसका उल्टा कैरेक्टर स्टार्टिंग या एंड में अपेंड कर दूंगा एज अकॉर्डिंग टू किससे मैक्सिमाइज हो रहा है। सो अब मेरे को पता है कि ये इसमें से जो मैक्सिमम है वो ऐड हो जाएगा, राइट। दिस विल बी एड टू द आंसर। अब ये तो हो गया, बट हमें जो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट सब सीक्वेंस है वो भी तो निकालनी है। दैट इज इजी, आई कैन जस्ट कीप इटरेटिंग। अगर मेरे को ए दिख रहा है, आई विल कीप इंक्रीमेंटिंग द काउंट ऑफ ए, राइट। और जहाँ पे मेरे को बी दिखा, मेरे को मालूम है मेरे को पहले कितने ए दिखे थे, तो उतनी सब सीक्वेंस में ऐड कर दूंगा। तो मैं क्या समझाना चाहूँ, लेट्स से ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, ये मेरा वेक्टर बी। तो मैं यहाँ पे आता गया, ए का काउंट 1 था, ए का काउंट 2 था, ए का काउंट 3 था, मैं बी पे आया। तो मेरे को मालूम है मेरे को आगे 3 ए मिल चुके हैं। सो आई नो देर आर 3 ए बी सब सीक्वेंसेस, राइट। सो आई विल ऐड 3 टू द आंसर। ऐसे मैं इस पूरे टेक्स्ट की सब सीक्वेंस काउंट कर लूंगा और एंड में जो इनमें से मैक्सिमम होगा वो ऐड कर दूंगा। दिस वाज बेसिकली द लॉजिक ऑफ दिस। सो दिस इज P0, ये मेरा पहला कैरेक्टर है A, एंड दिस इज P1, ये मेरा सेकंड कैरेक्टर है B। दिस इज माय आंसर। तो मैं चेक करता गया, इफ माय टेक्स्ट ऑफ I इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ 1, लाइक अगर ये मेरा B है तो मेरे को पता है कि मेरे सबसीक्वेंस ऐड होंगे इसमें। तो आई एडेड टू द आंसर P0, दैट इज माय काउंट ऑफ A। मेरे को कितने A आगे दिख चुके हैं, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। मैंने इंक्रीमेंटेड द काउंट ऑफ P1, राइट। और अगर ये पैटर्न 0 है तो मेरे को पता है ये A है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया A। then answer plus equal to max of P0 P1। so this was my starting case जो मैंने पहले बताया था। so I first counted subsequence inside the text और end में जो extra बनेंगी एक नया character ऐड करने से, वो मैंने ऐड कर दी। so this was the basic logic of this problem। then comes my third question। you are given an array of nums of positive integers। in one operation you can choose any number from nums and reduce it to exactly the half of the number। return the minimum number of operations to reduce the sum of nums by at least half। तो अपने को क्या दिया है, we are given some array, right। let's say इस array का sum is equal to s। what I can do is in one operation I can choose any element। let's say I choose some element, x element, so I can choose x element and do ax to ax by 2, right। इसमें मैंने कितना कम कर दिया, आई रिड्यूस द सम बाय ए एक्स माइनस ए एक्स बाई 2। तो ये इतना मैंने सम कर दिया, रिड्यूस, राइट। व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू डू मिनिमम नंबर ऑफ सच ऑपरेशन सच दैट द रिड्यूस सम is greater than or equal to s by 2, right। so basically while r is less than s by 2, I need to keep doing such operations. What is the minimum number of operations such that r can become greater than or equal to s by 2? So while r is less than s by 2, I will keep doing these operations। तो अगर इसको simplify करेंगे, I can multiply the 2 here. This will become 2 times r is less than l s। I need to keep doing this operation। ये तो बहुत ही मतलब ग्रीडी अप्रोच है इसकी। आपको पता है कि आप एक एलिमेंट को हाफ कर रहे हो एंड यू नीड टू रिड्यूस दिस सम वेरी फास्ट इन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो बेसिक लॉजिक क्या बताता है आपको, अगर आपको इस चीज को जल्दी करना है रिड्यूस, तो आप क्या करोगे, यू विल टेक द मैक्सिमम एलिमेंट। आप सबसे मैक्सिमम एलिमेंट उठाओ एंड उसको हाफ कर दो, बिकॉज जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको हाफ करने पे आपको सबसे ज्यादा स्पीड से सम कम होगा। तो दिस वाज द बेसिक ग्रीडी अप्रोच। अब आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे, what I did was I kept a multi-set। you can also use structures like priority queue or something। I kept a multi-set। multi-set में elements sorted होते हैं। so let's say sorted, let's say मेरी अब जो मेरी array है वो sorted है, so I keep this array in a multi-set। initially मेरा reduce sum 0 है। I take the maximum element, मैंने an उठाया, मैंने इसको half करा,
मेरे को पता है आर में अब कितना ऐड हो गया, ए एन माइनस ए एन बाई टू। फिर मैंने इसको मल्टीसेट से इरेज कर दिया और मैंने अब नया जो एलिमेंट है ए एन बाई टू इसको इंसर्ट कर दिया, राइट। I kept doing this while r is less than s by 2, that is my 2r is less than s, and I keep doing this up till then. So if you'll see my code here, this is my multiset, this is my sum, this is my answer. मैंने पहले पूरी array insert कर दी multiset में, and I calculate sum. This is my removed, that is r, while 2 times removed is less than sum. मैंने मल्टीसेट का सबसे हाईएस्ट एलिमेंट दैट इज द आखिरी एलिमेंट उठाया और मैंने वो रिमूव में उसकी वैल्यू माइनस 12 बाई 2, दैट इज मतलब कितना हमने कम करा वो ऐड कर दिया। देन आई इरेज दिस एलिमेंट एंड मैंने उसका हाफ वाला इंसर्ट कर दिया एंड आई एडेड टू द ऑपरेशन। दिस इज बेसिक implementation, right? Then comes the third problem. Sorry, then comes the last problem. You are given a zero indexed binary string floor which represents the color of tiles on a floor. Floor of I equal to 0 represents that the color is black, for I equal to 1 represents that the floor is white. You are given num carpets and carpet length. You have num carpets of black carpets and you can cover the tiles such that white tiles visible is minimum. Return the minimum number of white cells still visible. तो अपने को क्या दिया हुआ है? Let me start this, I guess. तो अपने को उसने बाइनरी स्ट्रिंग दी हुई है, इफ अ सेल इज इक्वल टू 1 देन दिस मींस द सेल इज वाइट एंड इफ वैल्यू ऑफ सेल इज इक्वल टू 0 दिस मींस द सेल इज ब्लैक। ऑल्सो उसने अपने को कुछ नंबर ऑफ कारपेट्स दिए हुए हैं, ब्लैक कलर कारपेट्स। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्लेस द कारपेट्स, लेट्स से मेरे पास एक कारपेट है लेंथ 2 की, then I can place this carpet over these two blocks like this and this will be covered as black, right? Let's say I have another carpet, then I can place this carpet over here to cover these two blocks. This will be covered black. Let's say these cells are white for now. Let's say this is a white cell, this is a white cell. So now you can see there are 3 white cells visible after using 2 carpets. So there are 3 cells visible, but ये optimal नहीं है because instead of using the carpet, let's say here, instead of using the carpet here, I could have used this carpet here, right? Now the number of white cells visible is equal to 2, right? So मैंने this is what I need to do. मेरे को carpets place करनी है in optimal way such that the number of white cells visible after placing all the carpets is minimum. This is what I need to do. तो अगर आप constraint देखोगे इस problem के, let's because this is a hard problem, you need to like look at the constraint. So constraints देखोगे, the floor length is 1000 and the carpet is also 1000 number of carpets. So you can get a gist of like DP in this, right? Because 1000 into 1000, 1000 is very less, and 1000 square is a very like optimal constraint. So 10 to the power 6, so you can get a 1000 into 1000 kind of DP vibe from this. So constraints really help a lot. Constraints देखो एक बार, like they tell you how the problem will look like, right? So as I said, you need to look, you need to do DP for this. Because greedy, I don't think greedy will work in any way. So you need to look at the constraint. So, but the DP was, it is DP ith cell, the cell I am currently at, and the number of carpets I have used, right? And carpets I used. This was my DP state, and what this told me was number of white cells, number of minimum white cells, number of minimum white cells visible so far, right? This was my DP state that I came up with. So the number of carpets that I have used up to ith cell,
and this gives me the number of minimum byte cells and that are visible so far. तो इसका मतलब क्या हुआ? Let's say I am at this block right here. Let's say this is the ith block, and let's say I want to calculate dp of ij, right? So I want to calculate the minimum number of byte cells that are visible so far at the ith cell after placing j carpets. तो यहाँ पे दो मेरे पास ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? देयर आर ओनली टू ऑपरेशंस, इधर मैं कारपेट प्लेस करूंगा और मैं कारपेट प्लेस नहीं करूंगा, राइट? लेट्स से आई प्लेस द कारपेट, राइट? इफ आई प्लेस द कारपेट राइट हियर, देन द नंबर ऑफ विजिबल वाइट सेल्स हियर इज 0। दिख रहे हैं ना आपको? तो यहाँ पे सब कवर हो गया, तो ये पूरा ब्लैक हो गया। देन द नंबर ऑफ वाइट सेल्स विजिबल हियर विल बी coming from these, and I know I already used a carpet here, और मेरे को पता है मैंने अब तक j carpets use कर लिए हैं, so the rest of j minus 1 carpets will be used in these blocks, right? So my dp of ij will be dp of I minus जो मेरी carpet की length है, let's call the carpet length equal to length, this will be dp of I minus length and j minus 1. This will be the number of minimum byte cells visible in this region, right? Because ये मैंने calculate कर रखी है state पहले ही, because I am going from bottom to up, right? तो मेरी dp of ij की वैल्यू क्या हो गई? minimum, I don't think you see because of my camera, so I will put it like, so my dp of ij will be equal to minimum of dp ij, I will call this dp ij, और मैंने carpet place करी, so that gave me this state, ये सब black color हो गए, and I want to calculate the minimum number of cells in this. This will be given by dp of I minus length, इस ब्लॉक का आखिरी इंडेक्स और कितनी कारपेट्स मैंने यूज करी, j minus 1, क्योंकि एक कारपेट मेरी यहाँ पे, so this becomes dp of I minus length and j minus, ये मेरी एक ट्रांजिशन थी, एज्यूमिंग मैंने यहाँ पे कारपेट प्लेस करी, राइट? बट अगर मैंने यहाँ पे कारपेट प्लेस नहीं करी होती, let's assume I do not place a carpet here, so we'll again draw the state. This is my ith block. I want to calculate dp of ij, that is number of minimum byte cells at the ith cell after placing j carpets. मैंने last state में zoom करके I placed a carpet, but let's assume I do not place a carpet here, right? I do not place a carpet here, so this cell will be naked now, क्योंकि इस सेल पे मैं कारपेट प्लेस कर ही नहीं रहा, so this cell is naked. This is either a 0 or a 1, right? This is either black or either white. और फिर जो भी जे कारपेट्स हैं, कि मैंने यहाँ पे लिखा है डीपी आई जे, तो आई एज्यूम कि जे कारपेट्स प्लेस हो चुकी हैं, सो ऑल द जे कारपेट्स मस्ट बी प्लेस्ड इन दिस ब्लॉक नाउ, राइट? So I want to calculate the minimum number of cells in this block after using j carpets, क्योंकि यहाँ पे कोई कारपेट प्लेस तो करी नहीं हमने. So what will this give me? This will give me, this is equal to minimum of dp ij, and this will be the region that I'm concerned about. तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? I know इसका आखिरी इंडेक्स क्या है, I minus 1, और कितनी कारपेट्स हैं इस एरिया में, j, क्योंकि यहाँ पे कोई कारपेट मैंने प्लेस करी नहीं, राइट? नंबर ऑफ कारपेट्स आई कंज्यूम वाज 0, सो j की j कारपेट्स इस एरिया में, so this give me minimum of this will give me dp of I minus 1, right? इस ब्लॉक का लास्ट इंडेक्स, j की j कारपेट्स यहाँ कंज्यूम हो रही हैं इस ब्लॉक में, एंड देन इस सेल का भी हमको इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर ये वाइट है, इफ दिस इज वाइट, तो दिस विल गेट एडेड, बट अगर ये ब्लैक है तो ऐड नहीं होगा, तो प्लस this will be the binary, if this is 1, this will get added, so let's call this what will I say, let's say state of I, s of I, right? S of I means if this is white, this will get added, or if this is black, this will get ignored, क्योंकि ये वाला कवर नहीं हो रहा है ना, ये वाला ब्लॉक, तो अगर ये वाइट है तो ये वाइट
मतलब दिखेगा आपको, this will not get covered, so this needs to be added to the answer. So these were the two states and a transition. So let's watch the code now. This is my floor size n, ये मेरा dp हो गया. मैंने पहले जो अपना पहला वाला है, if I draw, and this is my initial state, my zeroth state. यहाँ पे आप चाहे जितने मर्जी कारपेट्स प्लेस कर लो, number of visible white box will be equal to 0. This was my initial dp state, right? So initial dp state for 0th was my starting index before any tile. This was 0. Then I iterated over every tile and all number of carpets. And if we use a carpet here, that is j, अगर j है मेरा carpet, क्योंकि अगर मैं 0 carpets use कर रहा हूँ, then I can never use a carpet here, right? What I mean is, I am assuming that I am using positive number of carpets. अगर मेरी 0 carpets है, मेरी state कहाँ है, ये वाली, अगर यहाँ पे मेरा j 0 है, then my j minus 1 will become negative. So this makes no sense. So this is to ignore that. So dp of ij, this is dp of I minus carpet length, और 0 मैंने ये यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारी कारपेट लेंथ है वो लेट्स से ड्राइंग पे दिखाता हूँ, लेट्स से हम ये वाले ब्लॉक पे हैं बट हमारी कारपेट लेंथ 5 है, तो व्हाट दिस विल डू इज, तो ये मतलब एक्सीड कर जाएगी, दिस विल एक्सीड अप टू दिस साइड, राइट, दिस विल एक्सीड अप टू दिस साइड, पर ये अपने को नहीं करना. सो आई एम एज्यूमिंग कि मैं यहाँ पे तो इसको जीरो जीरो कर देता हूँ, राइट. So I take max of I minus carpet length of 0 and j minus 1 number of carpets on the left side. If we don't use a carpet here, this was the second case that I told you about, drag and drop के बताया था, dp of I minus 1 and j, और जो टाइल की स्टेट है, that is अगर टाइल white है तो हम काउंट कर लेंगे, अगर टाइल black है तो हम काउंट नहीं. Then I just return dpn of number of carpets, that is, then I return minimum number of cells, minimum number of white cells visible so far after I have reached this tile, after I have reached the last tile, और मैंने सारी कारपेट्स प्लेस कर दी हैं. दिस वाज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड. तो क्वेश्चन यही पूछा था कि अगर आप सारी टाइल्स ट्रेवर्स करके सारी कारपेट्स प्लेस कर दो, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ व्हाइट सेल्स दैट यू विल गेट. सो दिस वाज व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड, यही हमने उसको रिटर्न कर दिया. So these were all the problems from the bi-weekly contest. And if you guys like the video, leave a comment, like, subscribe. अगर आपको कोई doubt है, you can ask in the comments. Also, thank you Newton School for helping me with this channel. If you guys don't know about Newton School, they are currently giving out a 6-month long full stack development course. और इसका model pay after placement है. You have to pay 0 upfront fee, and they will get you placed into top MNCs like Google, Unacademy, etc. And they're offering a minimum package of 5 lakh. They are guaranteeing you will get placed minimum at 5 lakhs, but you can track up to any amount that you're capable of, any amount that you can think of. Also, जो इनके mentors हैं, all their mentors are from top MNCs like Google, Microsoft, Goldman Sachs. So you can be assured कि जो सारे mentors हैं, they are giving you quality content that can land you into the MNCs like Google, Microsoft themselves. Right, so quality पे zero compromise है, and you don't need to pay anything upfront. कोई hidden fees नहीं है, no terms and conditions and that kind of stuff. And आपको कोई prior knowledge भी जरूरत नहीं है. You don't need to have any prior knowledge of coding or that kind of thing. You can sign up for this course. They will just ask you for a basic aptitude test, and if you qualify in that, you will be signed up for the course, and you can start working towards your dream job. So if you are looking for a job in the tech field, this is a very good head start, and I highly recommend that you guys sign up or at least look into it. So that was it for the video, guys. I hope you liked it. If you did, just leave a comment. That helps me, that helps the channel grow. So that was bye bye.